और जी वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों को वेलकम कहते हैं जी। गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर प्रोग्राम है। अल्ताफ़ रज़ा आप दोस्तों के साथ मौजूद है। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे जी। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे जुमातुल मुबारक। हमारी जानिब से आपको जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आने वाला वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरे। और यह है कि सेहत के हवाले से वैसे तो हमारे साथ तशरीफ़ लाते रहते हैं जो कि आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स होते हैं, और इसके अलावा साथ साथ जो होते हैं जो डॉक्टर हजरात भी आप उनको देखते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको रोड सेफ्टी के हवाले से भी प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ जो है एवरी थर्सडे शो करवाते हैं। लेकिन यह है कि आज जो है हम सेहत के हवाले, सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होता है। सुबह सुबह का वक्त होता है, अक्सर लोग जो है सुबह जिम भी जाते हैं, शाम में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सुबह में हम आपकी सेहत की बातें, हम आपकी सेहत के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और डीएम डिजिटल की बात कर रहे हैं ना। और ये है कि आज हम आपको कुछ फ्यूचर के स्टार्स से मिलवाने जा रहे हैं जी। फ्यूचर के एक स्टार हमारे पास मौजूद हैं, एक हमारे पास कोच मौजूद हैं, और गेम है मार्शल आर्ट्स। और मार्शल आर्ट्स में मुख्तलिफ किस्में हैं जी, जिसमें ताइक्वांडो आता है, जिसमें जूडो आता है, कराटे आता है, और साथ में बॉक्सिंग आता है। तो उनसे मैं थोड़ा सा जो कोच हैं उनसे भी मालूम करेंगे कि ये मार्शल आर्ट्स में ही आती है ये जो बॉक्सिंग है जी। बॉक्सिंग इसको बहुत ज़्यादा एक पजीराई है, प्रमोशन है बॉक्सिंग को। अगर आप देखें यूके में, अगर आमिर खान को देखें, और इसके पहले थोड़ा सा आप चले जाएं तो नसीम हुसैन को देखें। नसीम हुसैन ने बहुत अच्छा, जिसे नैस उनको कहा जाता था, और ये है कि उन्होंने बहुत एक नाम बनाया, पाकिस्तान के हवाले से उनको जाना जाता रहा। और इसके अलावा आमिर खान है, उनका बहुत नाम है, जैसा कि अक्सर औकात वो टाइटल जीतते हैं। और साथ में ये है कि यूके का नाम भी होता है, मुल्क का नाम भी होता है, साथ में बैक कंट्री का नाम भी होता है, जहाँ से उन कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ से भी उनका नाम होता है। इसी तरीके से एक आज़ाद कश्मीर मीरपुर से आपका ताल्लुक़ है जी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और ये है कि नया एक टैलेंट है जो कि सामने आ रहा है जी इस वक्त। और आप इससे पहले उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, उनसे मालूम करेंगे, गपशप करेंगे कि कैसे आपका रुझान हुआ, बॉक्सिंग की जानिब आ गए। अब उनकी पहली प्रोफेशनल फ़ाइट जो है वो 21 जनवरी फ्राइडे को बर्मिंघम में होने जा रही है जी। उनकी पहली जो प्रोफेशनल बाकायदा फ़ाइट जो है। सो उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आकाश हुसैन जी। आकाश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, Akash? I'm doing great. ठीक हो। You're gonna have your first fight in Birmingham. That's right. And you're going to have your first interview on DM Digital Television. Am I right? That's right. Okay. So have you been to any radio before, radio or television? Yeah, before? I've been a few. Last time was the BBC Asia Networks. Okay. And a few other radio and television on Sky Sports. Okay. So it's been great. So you're all right over here, just like you're all right in the ring. Yeah, it's cool, calm, collective. All right, come on, all right, no problem. So हमारे एक और हमारे साथ गेस्ट हैं जी, इरफान मलिक हैं, जो कि एक्स बॉक्सर हैं, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है। और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है, लाहौर से आपका ताल्लुक है। इरफान मलिक साहब हैं जी, इनका लाहौर से ताल्लुक है, और पाकिस्तान, सभी पाकिस्तान है। और साथ में ये है कि आप यूके में जो है एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल भी आपने विन किया है। और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो है गेम्स से आपकी दिलचस्पी है, मार्शल आर्ट्स के हवाले से। और साथ में आप हैं जी एक जो जिम है उसके इंस्ट्रक्टर हैं, आप उसके जो जिम को रन भी कर रहे हैं जी। इरफान मलिक अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं इरफान मलिक? ओके, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले आपसे बात करते हैं जी, आकाश हुसैन, कैश भी आपको कहा जाता है? Yeah, that's what they call me for boxing wise, and my ring entrance. Okay. And on the papers and such as. तो कैसे कब से स्टार्ट किया ये बॉक्सिंग? Well, how I got started was I was 14 years old. So how old are you now? I'm 18. 18 now. 18 so about 4 years ago you did your start. 4 years I started, and the reason was that because I used to get into fights all the time on the streets. And you used to get the fights, okay. And one time my dad himself. Yeah. He took me to this boxing gym called Glen McCrory School of Boxing. Okay, तो इसका मतलब है कि आप जब फाइटिंग किया करते, you used to fight every time in the streets. Police used to be knocking on the door, and honestly, have you been caught sometime? Have you been caught sometime by police? Oh yeah, many times. Charged? Yeah, certainly. I was getting charged for Section 47. AB8 of age of 14. So luckily, is that a good thing to tell on the TV? Of course not, but that's obviously boxing has changed my life totally. Yeah. And it's taught me like a lot of discipline, and it's made me a better person. So I would just like to say, all the people out there, they're like the young generation, and they have aggression. I would recommend them to go to the gym
and let that out at the bags. So you calm yourself. Yeah, you of just, course it does. It just aggression जो है वो खत्म हो जाती है. You got know. self-confidence in this way. That's right, isn't because it? you let all your anger out the bags and your sparring and all that, and also makes you a better person. Because it certainly made me a different person. And So why only boxing? Why not kickboxing or why maybe not that any as other? well. Maybe, to be honest, any sport would change you. I would, if you really get into it, it would definitely change you. Sure. No, I'm talking about specifically you. Why Why did I choose boxing? Yeah, just only to boxing. The reason was that because I used to really like Mike Tyson. I think he was fantastic. He's like my idol. He's your idol. Yeah, he's Okay. my idol. So is Muhammad Ali, of course. Yeah, Muhammad And Ali. I've just had a passion for the sport ever since I Okay. was little. And every time Mike Tyson used to fight, no matter what, I used to watch it because he was incredible. So have you got the videos of them? I've got all his and tapes. big posters of them. Yeah, posters, books about him, his tapes and his history, his also documentary. All right. And he's fantastic. And also Muhammad Ali. Muhammad Ali as Yeah, well. he was amazing. So you do practice as well? Like how many hours a day you do practice, or how many days a week you do practice or something? Well, actually, I train 5 times a week. 5 times a week? Yeah, 5 times so a week. 2 days you get rest? And Which is the weekend, Saturday and Sunday. Okay. And which will be 3 times a day, Monday to Friday. True. So what we do is, me and my coach Glenn McCrory, he's a former world champion. Glenn McCrory, IBF, yeah. That's right. And at this minute, he works for Sky. He's a commentator, so he knows a lot about boxing because he's been in this game for many years. Sure. And so at 7 a.m. in the morning, what we do, we go for a run together, not just Run myself. together. Okay. Him as well, so he pushes me more. And then 11 o'clock we do boxing for Okay. about hour and a half too. So all day you spend like this? Yeah, just all day is scheduled to only to the boxing side? just and also at 5 o'clock I've got a strength and conditioning, Okay. which is like strength, like squats, chin-ups, and stuff like that. Alright. And that's about it, 3 times. So you study as well? Monday to Friday, no. You study? No study. No. You just finish the study? Yeah, just Okay. training. Okay. Do you have any? Do you take some special food like that? What people say that you can't rely on junk food, and Totally. you have to do so. Have to eat some strengthening food, or just like Asian अपनी food है ना Pakistani. कोई देसी घ्यो श्यो पींदे हो? Well, to be honest, nothing like that because it's very greasy, and because it's very oily and very greasy, so like nothing like that. So your coach doesn't recommend that food? No, it doesn't. Like what I eat is small portions, and it'll be like fish, like protein, like grilled chicken, अच्छा. like boiled rice, pasta, and stuff like that. यार पाकिस्तान में जो पहलवान होते हैं, you understand पाकिस्तानी पहलवान? Yeah, but to be honest, वो that's तो बड़ा different 'cause दूध शूध पीना उन्होंने इधर. but that's different. That's like weightlifting and also. But the boxing is different. Yeah, just totally, because when you're in that ring, you do like many rounds, and you gotta have stamina. You should have stamina. Yeah, exactly. You do. You got to have and stamina. by eating grease, I don't think that'll help you, to be honest. Oh, I see. I see. It does That's a common affect quite a bit. understanding there. I'll ask this question to the coach. आप इरफान मलिक आप coaching भी करते हैं. तो tell us something about what kind of food one should have. Reason why we can't afford to have like milk or this, because we have to control our weight, plus Control weight as well. Control weight and increase strength. So you have to be very limited with what you're gonna. So is now strength increasing, like badam हो गए और नाल अपना Yeah, but there's certain amounts. Like certain amount. I Up do. to a certain Of course, I extent. have badam. So that's my favorite. You have badam as well? Yeah, I do. I think it's great. But like there's certain amount, like obviously, like just like a handful Okay. of badam, probably 3 to 4 times a week. Okay. It's pretty good for you. All right. तो इरफान भाई आपसे बात करते हैं जी. आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस किस्म की फूड होनी चाहिए. आप किस किस्म की कोचिंग करते हैं? मैं कोचिंग ट्रेनिंग करते हैं सुबह के वक्त रनिंग No problem. You can speak English. No problem. मैं ज़रा उर्दू में we'll go comfortable for a हूँ, ना morning तो time, निकल जाता. then we'll come back and we take a rest, and then afternoon we do again like. So do you take classes? Yeah, proper we do classes. How many people in one class? I go about 15-20 people every time. Okay, So, 15-20 yeah. people. How But many I classes you also- do a day? I do a lot of one-to-one trainings. One-to-one training I as train well. according to their needs. So professional one, they got different time schedule training. True. Amateurs have a different. So if professional one is full-time job, is you have to do whole day, True. like in hour, 2 hour sessions, and then you do that.
You work for some organization or you No, just it's run just your own? The Gallant Boxing Club is my own. That's your own I club. do full time that job. Okay, So- okay. आप कितने अरसे से कर रहे हैं और जब बॉक्सिंग में आप थे तो कहाँ Yeah, तक पहुँचे? I used to do boxing. How old are you first of all? I'm 39. 39. Yeah. Oh, hey, you look like about what 29? Because you're fit. So obviously because the my exercise diet, when I pays. was boxing, I was very strict to my diet. Hmm. I'm very careful what I eat. Okay. And then now I'm coaching and I'm full. Okay. Well, if we take one caller as well, somebody who wants to join us on the call. जी आपसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई। आप कॉल कर सकते हैं जी। वैसे अभी थोड़ी देर हमारे पास और मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम गपशप कर रहे हैं। आप भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, अगर आपने इनकी फ़ाइट को देखी है तो आप तशरीफ़ लाइए, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई भी आप बात करना चाहें तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अच्छा जी इरफान, तो कोचिंग के मुतालिक इससे पहले आप बॉक्सिंग भी I करते used to रहे। do amateur boxing and I'm अच्छा, professional. आप किन से इंस्पायर थे और कहाँ तक पहुँचे? This is Muhammad Ali's all time, everybody's Muhammad Ali all the favorite. time. Muhammad Ali, Mike Tyson. Yeah. So they all everybody's favorite. अच्छा, मोहम्मद अली डिफेंसिव बॉक्सिंग खेलते थे। ये डिफेंसिव ना, Yes. थोड़ा आगे जाकर उन्होंने अटैक भी करना, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद बैक पे डॉजिंग भी। जी। माइक टाइसन थोड़ा एग्रेसिव होके खेलते थे, कभी वो Powers किसी भी। का कान भी खा जाते थे, है ना? कान भी निकाल लेते थे, है ना? तो किसकी तरह माइक टाइसन है या मोहम्मद अली? Muhammad Ali is मोहम्मद अली, is best. ठीक है। हाँ, जरा माइंड ब्रेन को यूज करते हुए कि Yeah. कहाँ पे है दूसरा, कहाँ पे अटैक कर रहा है ना? अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हाउ मेनी फाइट्स यू वन? Professional की, फिर उसके बाद अभी I'm professional coach, also run my boxing club. बॉक्सिंग क्लब भी So, रन कर रहे जी। हैं। मेडल्स वगैरह जीतते हैं। जी. Also I help youngsters, people